Hello everyone, welcome to YouTube channel of Genius Public Inter College. So today we are going to start with next chapter, that is exponents and powers. First of all, what are exponents? Exponents होते क्या हैं? Yes, powers की फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है? Okay. You're correct to an extent, but let's see what exactly exponents are. Exponents होते क्या हैं? The number of times a number is multiplied. Please listen to my statement, what I'm saying. The number of times a number is multiplied. नंबर ऑफ टाइम्स आप एक नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, और किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? बाई इटसेल्फ, उसी नंबर से उसको बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हो. द नंबर ऑफ टाइम्स अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ, दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज योर एक्सपोनेंट. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट्स बोलते हैं. अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं. मैंने क्या बोला? फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर मल्टीप्लाइंग 2 ट्वाइस, 2 को हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई करें, दिस कैन बी रिटन एज 2 to the power 2. इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2 to the power 2, बिकॉज वी आर मल्टीप्लाइंग 2 for 2 times. इफ यू आर मल्टीप्लाइंग 2 thrice, this we can write as 2 to the power 3, as we are multiplying 2 for 3 times. If suppose we are multiplying 2 for 4 times, this we can write as 2 to the power 4, which means 2 is being multiplied for 4 times. Now if suppose for example I write as 3 to the power 5. Now we will learn each and everything about this thing. 3 to the power 5. In this, 3 is your base. The number which is written down is your base. ये 3 आपका जो नीचे लिखा हुआ है, ये क्या है? आपका base है. This 5 which is written on the top of the number is called as either index, power, or else exponent. This 3 is called as base, and this 5 is referred as either index or else power or else exponent. It has 3 names. Fine. Next thing is, we can say that here 3 is base, 3 आपका बेस है, एंड 5 इज एक्सपोनेंट और एल्स पावर. 5 क्या है? आपका एक्सपोनेंट है या फिर पावर है. नेक्स्ट थिंग इज वी रीड इट एज 3 to the power 5. इसे हम लोग कैसे रीड करते हैं? 3 to the power 5. 3 to the power 5. इसको अब ऐसे कोई नहीं पढ़ेगा मैम 3 की पावर 5 है, 3 के ऊपर पावर 5 लिखी हुई है. It is read as 3 to the power 5. It means on 3 we have written the power 5. This means 3 is multiplied 5 times. इसका मतलब क्या हुआ? मैथमेटिकली 3 को हम लोग क्या कर रहे हैं? 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं. 3 to the power 5 means 3 is being multiplied for 5 times. 3 को हम लोगों ने क्या किया? 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया. This is what all we can get from this expression, and this is referred as, ये आपका जो 3 to the power 5 लिखा हुआ है, जस्ट लाइक आप फ्रैक्शन जैसे a बाई बी लिखते हो, देन यू कॉल इट एज, जैसे आपने लिख दिया यहाँ पर a बाई बी,
आप बोलोगे दिस इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन और एल्स दिस इज अ रैशनल नंबर. इन द सेम वे दिस फॉर्मेट इज रेफर्ड एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं. और एल्स दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज पावर नोटेशन. इसको पावर नोटेशन भी बोलते हैं. दिस इज ईदर कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म और एल्स इट इज कॉल्ड एज पावर नोटेशन. आई होप इतना आप सभी लोग को क्लियर होगा. Okay, fine. Next is, just listen to it carefully. Look at this example. This we have discussed while solving multiplication operation questions. Multiplication operation के जब question solve कर रहे थे उस टाइम भी हमने discuss किया था. If suppose I write -1 to the power 5, the result of this is -1. It means we are multiplying -1 for 5 times. And if suppose I write -1 to the power 4, it means we are multiplying -1 for 4 times. -1 to the power 5 means we are multiplying -1 for 5 times, and -1 to the power 4 means we are multiplying -1 for 4 times. Just pair it up. This minus and minus will give us plus. Again it makes a pair, it will also give a positive answer. We are left with one number which is unpaired. This is unpaired, it means it will give us a नेगेटिव रिजल्ट. इसकी वजह से क्या होगा? हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा. सो वी विल गेट आंसर एज -1. एंड इन द सेकेंड केस दिस मेक्स वन पेयर. अगेन दीज टू नंबर्स विल मेक वन पेयर. एट द एंड वी विल गेट positive result because these two are giving us positive result. Here we will get the answer as 1. Now from here we can conclude that when we are multiplying -1 for odd number of times, जब हम लोग -1 को odd number of times, 5 क्या है? odd number है, इसको मतलब odd number of times multiply कर रहे हैं, then we are getting negative result. But when we are multiplying it for even number of times, we are getting positive result. From here we can get a conclusion that -1 to the power n, this will give us a positive result when n is even. And if we have -1 to the power n, this will give us negative result if this power is an even number. इतना क्लियर है सभी को? अगर ये पावर इवन नंबर है तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा. और अगर ये पावर आपकी ऑड नंबर है तो हमें रिजल्ट कैसा मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा. कुछ एग्जांपल्स देखते हो, आप लोग उसका रेस्पॉन्स दो मुझे. इफ सपोज आई राइट -2 to the power 7, just tell me whether this result will be positive or negative. इसका रिजल्ट पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? Yes, it will be negative because here power is odd. पावर कैसी है? odd है, तो रिजल्ट कैसा होगा? नेगेटिव होगा. And if suppose I write it as -3 to the power 16, here हमारा रिजल्ट पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? Yes, it will give us a positive result because power is an even number. इतना क्लियर है? ओके.
Next you see, if we are given with the rational number a upon b and the power of this rational number is n. We are given with the rational number a upon b and its power is n. Now just first of all we'll discuss one example. एक example देखते हैं, वहाँ से conclusion निकालेंगे. If suppose that we are given with a rational number 2 upon 3 and its power is 3. What does it mean? This means we are multiplying 2 by 3 for 3 times. हम लोग 2 by 3 को क्या कर रहे हैं? 3 times multiply कर रहे हैं. यही है इसका मतलब. Its power is 3 means this fraction is being multiplied for 3 times. Now can we write it as 2 into 2 into 2 divided by 3 into 3 into 3? Is there anything wrong if I write it in this way? No. Again this can be written as, see here 2 is multiplied for 3 times, we can write it as 2 to the power 3. And 3 is being multiplied for 3 times, so this can be written as 3 to the power 3. लिख सकते हैं ऐसा? लिख सकते हैं? Now you see here, in the starting we were having this in the form of 2 upon 3 whole power 3. Now after simplifying we are getting it in the form of 2 to the power 3 divided by 3 to the power 3. So now can I say, like, if a fraction has whole power 3, then separately we can keep the power on the numerator and on the denominator. अगर हमारे पास पूरे फ्रैक्शन का पावर 3 है तो इसको हम न्यूमरेटर पे सेपरेटली इसकी पावर 3 लिख सकते हैं और डिनोमिनेटर पे सेपरेटली इसकी पावर 3 लिख सकते हैं, है ना. इसको हमने कहीं से अपनी मर्जी से तो लिखा नहीं, हमने बस सॉल्व किया और ये इस फॉर्मेट में आ गया अपने आप पे. In the same way, if we are given with a rational number, this is generalized form. If we are given with a rational number a upon b and its power is n, we can write it as a to the power n upon b to the power n. इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं. This is the generalized form of this example. ये क्या है? इसी example का ही generalized form है. Next we are going to study laws of exponents. Fine, we have few laws in this chapter. I'm going to discuss one of them. Laws of exponents. Just listen carefully to it. First law says that, just listen carefully, this is going to be used in your exercise. If you will understand the concept, तो exercise easily solve हो जाएगी. e to the power m into a to the power n is equals to a to the power m plus n. Now you feel like, ma'am, this is a magic. ये क्या हो रहा है? अपनी मर्जी से आपने क्या लिख दिया? It's not a magic. Here we have a concept. First of all, let's see an example. If I write an example as 2 to the power 3 into 2 to the power 5. If it is in the form of 2 to the power 3 into 2 to the power 5, so according to this law we can add up the powers. ऐसा ही कुछ किया है. See, actually this law says that if we have same base, अगर हमारे पास क्या है, base same है, and we have either different powers or else same powers. Powers ये different भी हो सकती हैं, same भी हो सकती हैं, and they are multiplied together. उन्हें क्या किया है, हमने आपस में multiply किया है. Then the powers get added up. We have to write base for only one time. हमें base को सिर्फ एक ही बार लिखना है, and we can add up the powers. और हमें powers कर देनी है add. अब this is not a magic. We are not adding up magically. इसको magically हम लोग add नहीं कर रहे हैं. इसका logic है. Logic क्या है, देखते हैं. So according to identity we can write it as 2 to the power 3 plus 5, and here we will get it as 2 to the power 8. Logically देखते हैं क्या है.
Here 2 is multiplied for 3 times. 2 को 3 times multiply कर दिया, hide it. Now we are multiplying 2 for 5 times. Now overall you see we are multiplying 2 for 8 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Now can you write it as 2 to the power 8? लिख सकते हो. क्या हुआ? अल्टीमेटली वही हुआ ना, 2 को 3 टाइम्स लिखा, 2 को 5 टाइम्स लिखा, ऐड कर दिया. सो इतना लिखने से अच्छा क्यों ना हम इसको यहीं पर ऐड अप कर लें, आया तो वही. सो इफ़ वी हैव सेम बेस, either different or same powers, then we have to add up the powers. Powers क्या हो जाएंगी? Add up हो जाएंगी. Same powers का मतलब जैसे क्या हो गया आपका, सपोज करो लिखा हुआ है 3 to the power 4 into 3 to the power 4. Your base is also same, powers are also same. This we can write it as 3 to the power 4 plus 4 and this 3 to the power 8. सपोज करो मैं आपको ऐसा कुछ एग्जाम्पल पूछूं, बताना, आप बताना आंसर क्या होगा. 4 to the power 7 into 4 to the power 3. Yes, it is 4 to the power 10. ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा. हाँ, बाकी लॉस नेक्स्ट क्लास में करेंगे. लेट्स डिस्कस फ्यू एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. कुछ टेक्स्ट बुक से एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं. Look at the example number 1 of your NCERT. It is on page number 83. The question is like, express the following numbers as a product of powers of prime factors. I am solving first bit for you. You have to express this number in terms of powers of prime factors. प्राइम फैक्टराइजेशन तो आपने सीखा हुआ है. देखते हैं पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं. प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं. 64 के प्राइम फैक्टर्स, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 16s are 32, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, and 2 1s are 2. Here we are multiplying 2 for 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 6 times. One, 2, 3, 4, 5 and 6. Now can we write it as 2 to the power 6? This is a final answer. We have written this number in the exponential form. Look at example number 2. Question says that evaluate the following. You have to evaluate the following terms. Look at the first bit. This is exactly opposite of example number 1. In example number 1, you were given with the exponential form and you have to, you were given with the number and you have to write it in the exponential form. But here you are given with the exponential form and you have to write it in the numeral form. 12 to the power 2 means you can write it as 12 into 12 because it means 12 is being multiplied twice. And 12 into 12 is nothing but 144. This is your answer. Moving on to question number 3. It's example number 3 of your textbook. It says that express in the form of P by Q. आपको P by Q की फॉर्म में क्या करना है, इसको एक्सप्रेस करना है. It is as 3/7 to the power 3. ऐसा कुछ दिया है. हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, उसी का ये क्या है, एप्लीकेशन है. 3/7 whole power 3 means we are going to multiply it as 3/7 into 3/7 into 3/7.
Again we can write it as 3 into 3 into 3. You can solve it directly also, no need to increase one more step. In the denominator all the numbers will get multiplied together. 3 3s are 9, 9 3s are 27, 7 7s are 49, 49 7s are 343. We got the answer. 343 is the answer. Moving on to next example, that is example number 4. In this I'm solving second bit for you. You have to simplify it. आपको क्या करना है, इसको simplify करना है. -2 to the power 3 into -10 to the power 2. First of all expand it. -2 to the power 3 means -2 is being multiplied for 3 times. -10 to the power 2 means -10 is being multiplied twice. Now first of all multiply all the numbers. After that we are going to solve the sign conventions. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 10s are 80, 80 10s are 100. मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, 800 आ गया. Now look at the signs. Minus and minus, these two will give a positive result. Minus and minus, again these two will give us a positive result. This is unpaired, इसकी pairing नहीं हो पाई, it means it will give a, yes exactly, very good, this will give us a negative result. So final answer is minus 800. Look at the example number 5. Question says that write each of the following rational numbers in exponential notation. Now in the second example you were given with a rational number, सिर्फ एक rational number दिया था, exponential notation में था, and you have to write it in form of rational number. अभी क्या बोल रहा है, आपको ये दिया हुआ है and उल्टा आपको इसको किस में लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है. So in that look at the last bit, third bit. -27 upon 125. So you have to do the prime factorization of numerator and denominator separately. 27 को हम लोग prime factorization करेंगे तो 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3. See here it is negative, मतलब इसकी पावर ऑड होगी या इवन होगी. Yes, its power is odd, that's why here we are getting the negative result. तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको नेगेटिव नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है. -3 इंटू -3 इंटू -3, इसको माइनस माइनस से ही मल्टीप्लाई करना, देन ओनली वी विल गेट द नेगेटिव रिजल्ट. अगर 3 3 3 लिख दोगे तो ये तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो गलत हो जाएगा. अगेन 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. 5 2s are 10, 5 5s are 25, again 5 5s are 25, 5 1s are 5. We can write it as 5 into 5 into 5. We got the answer as -3 to the power 3 upon 5 to the power 3. Now can we write it as -3 upon 5 whole power 3? कुछ प्रॉब्लम है? उसी का उल्टा कर दिया जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था. फाइन, दिस इज आवर फाइनल आंसर. मूविंग ऑन टू द लास्ट एग्जाम्पल, example number 6. Here you have to find out the value of x. First bit is, if 2 to the power x is equals to 32, then find the value of x. So first of all we have to write 32 in the exponential form. So this is 2 to the power x
टाइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32. Now we can write it as 2 to the power 5. See here we have the same base. यहाँ पर हमारे पास बेस कैसा है? सेम है. So if we have the same base and it is given that these two are equal here, LHS and RHS both are equal, and it is possible only when these powers are also equal. ये दोनों तभी इक्वल होंगे जब ये पावर्स भी इक्वल हों. अदरवाइज क्या पॉसिबल है कि ये दोनों इक्वल हो जाएं? बेस तो इक्वल है ही, बेस सेम दिया हुआ है और ये दोनों आपस में इक्वल गिवन है. सो ये इक्वालिटी कब पॉसिबल है? जब इनकी पावर्स भी इक्वल हो. इट मीन्स हियर वी कैन से दैट x इज इक्वल्स टू 5. x किसके इक्वल है? 5 के इक्वल है.